आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वही है सेल्स मैनेजमेंट और हम डिस्कस कर रहे थे चैलेंजेस ऑफ न्यू सेल्स मैनेजर। क्योंकि जब हम सेल्स मैनेजमेंट को ये टॉपिक जब हमने सेलेक्ट किया था और इस पे बात करनी शुरू की थी, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट was the challenges of the newly promoted sales manager or challenges of a sales manager who is already working as a sales manager or somebody who's working as a district sales manager and is the potential candidate to become a future sales manager. So whatever are the challenges, but before going into digging on the challenges, there is another aspect on which a sales manager who is working as a sales manager or somebody who is newly promoted sales manager or somebody who is going to be a sales manager, he has to look into the most important aspect, which is not directly related to the sales management. It's not a job description of a sales manager, yet it influences the job of a sales manager to a great extent, and that is understanding the current sales culture. So current sales culture, when we are talking about the sales culture, or current sales culture, it is very important to look at the two major aspects of the sales culture. One is called the corporate culture and the other is the departmental culture. So there is a culture, overall culture in the company, and then within that company, you have a corporate culture and then you have a departmental culture. So there's sometimes those two cultures overlap each other and sometimes they just stay away from each other. So there are certain areas where they collide with each other and the others are where they melt together. The more they melt together and more they overlap with each other, the better the culture is. So why it is very important for a sales manager to understand the current sales culture. It has its own values, and since we keep talking about the different aspects of the culture, then you will come to a certain level of understanding the why it is important for a sales manager to understand the sales culture. Now, culture itself is a very broad term, and it's very difficult for a sales manager to understand and comprehend at the beginning of his promotion or at the beginning of his job. Sales culture, why it is important, as I said earlier, is because you are inheriting its root in the larger corporate environment. And it could be good culture, it could be bad culture, or it could be an indifferent culture. Culture has so many different dimensions, but frankly speaking, we could divide it into three different categories. One could be called the culture of the industry. Say, for example, there is a whole culture of an industry, like a pharmaceutical industry has its own culture. A car industry has its own culture. Financial services has its own culture. Advertising has its own culture. So advertising, car industry, pharmaceutical, FMCG, they have their own culture, and that culture is called the culture of the industry. But then in itself, there is a corporate culture. So the big culture outside is the culture of the industry. And then in that industry, inside it, you have the culture of the corporate. Say pharmaceutical companies have a culture, and in that culture, you have culture. Eli Lilly has its own culture, and Getz has its own culture, and Janux has its own culture, and Pharmatic and Shigan has their own cultures. So different cultures in large, big culture of the industry. And then within the corporate culture, so industrial culture, and then the corporate culture, and then within that corporate culture, you have the culture of the departments. Earlier, that culture with industry or corporate itself is an extremely broad term, and it's very difficult to define it, but it relates to the overall feeling one gets when one works in that organization or interact with the people of that organization. To understand the three major culture sets, we have to dig deeper into it and try to understand that what is the culture of the industry and how it affects the overall culture, what is the culture of the corporate, how it affects the culture of different departments within the organization, and how the culture of the departments has to align or to avoid misaligning with the culture of the corporate and with the culture of the industry. So in order to understand this,
we are going to make some drawings here on the whiteboard, and we'll try to understand it. And then, as usual, as I ask questions, so we are going to ask certain questions to the different aspects of the culture to understand it, that how we can avoid the misalignment between the three different kind of cultures, and how it is important for all the cultures to meld together. The better they meld together, the better it is the chance for the company to be more successful. Ideally, all these cultures should meld together and work together in order to create a kind of a synchrony and a harmony to make the company become more effective, more efficient, and more profitable. So what's the important thing here? The important thing is to understand how much cultural overlap there is between your industry, between your corporate, and between your departments. So let's look at the different forms of these cultures and how it affects. So let's look at the cultural management. This is how we are going to do it. Management. And let's draw 3 different circles. So we call, this is the culture of industry. So we call it industry culture. And then this is we call corporate or company culture, and this we call sales department culture. So cultural management is the first thing for a sales manager to understand to become a good sales manager. So now you see, this is the area where all 3 cultures, they meld together. And then there are areas where 2 of them are merging together, 2 of them are merging together, 2 of them are merging together. So ideally, this area, the bigger this area is, the better the cultural alignment is. The smaller this area is, the cultures are totally misaligned. So this is not the ideal situation. Originally, when I draw this, so you see 1 is this, and then 2, and then 3, and this is the only area where all 3 cultures are aligned together. In a company where you want to have an ideal culture, which is, we can't say it's absolutely impossible, but it is the desirable thing. So we say this is one big circle, which is that's not a very good circle, but anyway, this is the industry circle, industry culture. And within this industry, then we have your company or your corporate culture. And then within this, we have sales department culture. Now you see the big culture of the industry, and the corporate culture is within that industry's culture. It's not coinciding with it. It's not going against it. And then your sales department culture is also within the corporate culture. So all 3 cultures are absolutely and ideally aligned with each other. So that's where the melding is the highest here. And that's where company's culture, corporate culture, sales industry culture, and industry culture, departmental culture, all the cultures are aligned to each other. But this is the ideal situation. This is what we require when we are dealing with company's culture. And this is what a sales manager needs to understand. Yeah,
Later on, I will explain it, that sales manager position and a sales manager position, sales manager is in no position actually to affect the culture of the company. But again, it is very important for him to understand the culture of the company, and then he will be able to give a candid feedback to his superiors and his bosses. And feedback is so important in the end that it's going to change the future of a company. Mostly what we see is that companies are the owners of the company, and they just don't want to listen to everybody. They just want to listen to one person or two people, and those are the people who actually know what to tell. So they put on a lot of filters on the information. They don't give a candid feedback. There are two kinds of feedbacks that they are giving actually, and both are very dangerous. One is what CEO or MD or the owner of the company is interested in listening to. And the second is that what the person who is giving feedback is interested in giving to the CEO, because the feedback is going to determine the future of that person, how long he's going to stay in that organization. So he has to put in a lot of filters. So ideally, a good person like Jack Welch. I'm not a big fan of Jack Welch anymore, but he used to talk to his people, and he would just go to the floors and the workshops of his company, and he started talking to the laborers, to the supervisors, to the departmental managers, everybody who was engaged in the operation and manufacturing and quality control. And then he starts to get a feedback, and then would develop an opinion based on different opinions of which were actually made by different observation at the different level of the organization and the different cultures of the organization. This is how ideally a CEO should be working, but because CEO wants to stay away from the problem, and his only concern is the money which is coming, which is the profit and the return on investment. And the guy who's giving the feedback is just one guy, or ideally maybe two guys who are giving the feedback, and they know how to manipulate it. They know what he wants to listen to. Questions needed to be asked to learn more about the culture. Then again, as we said, there are three different dimensions of the culture: industry, corporate company, or the department. So what questions we need to ask in order to determine what a real culture looks like, what it should be, and how to understand. Our idea of asking these questions is actually to understand the three different levels of the culture. The better is our understanding of the culture of the industry, the culture of the corporate, and the culture of the department, better we are in a position to develop an opinion and to come up with the effective and most efficient feedback, which is required by the bosses when they are setting up strategies for future. So, and that's where a sales manager is a person. To me, sales manager is actually a head office person who is based in the field. So that's how I define a sales manager. So he is actually a technical manager. He is part of the technical team. That means sales manager and product managers are equal in their ranks and equal in their importance. But somehow in the recent culture, I've seen product managers are treated differently than sales managers. Those sales managers are the ones who are the kamauputs of the company. They bring in home the money. Anyway, that's not the question. The question is what questions we need to ask to learn more about the cultures. For, let's say we talk about the industry first. So what kind of questions a sales managers need to ask to learn about the culture? Now, to some people, this could be like waste of time that I'm just going into culture instead of talking about the sales management. But sales management is, ideal sales manager should know about the corporate culture, about the industry culture, and about the department culture. So what questions we need to ask to understand the culture of the industry? So the first question is, if your industry is a conservative industry or a modern one. By conservative, I mean like if they have a dress code, like for example, pharma industry. ये वो industry है जिसके ऊपर हम mostly बात करते हैं. Pharma industry is
industry, which mostly is a conservative industry. You cannot walk in a doctor's chamber wearing jeans and sneakers and a t-shirt. Maybe sometimes when you are doing a campaign, but still you are wearing a dress pants and dress shoes, and then you are wearing the polo shirt with company slogan or something on it. But mostly it's a conservative industry. Pharmaceutical company is a conservative industry. But on the other hand, if we are talking about some other companies, other industries like non-conservative industries, advertising or acting could be a non-conservative industry. It is a modern industry. It gives you the freedom to wear and talk and express whatever you want to. So that's a different kind of industry. So first question is it a conservative environment industry? And is there a dress code, formal, casual, what it is? Second question you need to ask to learn more about the industry is it a very analytical type of industry? This is going to draw the line. If it is an analytical type of industry, your examples could be research and development companies, consulting companies, engineering, maybe. So these are the companies, etc. These are the companies, these are the industries which are extremely analytical. Research and development, extremely analytical. Consulting is analytical because consulting has to do a lot of analysis. Engineering is an analytical industry. What could be the third question when you are looking at asking a question, when you're looking at the culture of the industry? Is it a creative environment? Okay, so 3 is if it's a creative environment industry. As I said in the beginning, what could be the creative environment industries? Typical examples could be consumer products, like FMCG companies, like Procter & Gamble, like Lever Brothers, etc., etc. Advertising. Movie industry. So once you determine this, then you are in a better position to understand what kind of industry you're working in. Are you working in a conservative environment? Are you working in a creative environment? Or are you working in an analytical environment? Every environment has its own terms to dictate, and every environment has its own culture to inculcate. And the trickle-down effect of that culture, of that industry, is going to come to the corporate where you're working, and then, of course, subsequently to the department in which you are operating in. So, as I said, we have 3 different categories or 3 different dimensions of culture. So we ask the questions already related to the industry. Now, what about the company or corporate? Questions about corporate or company. What could be the first question? What does senior management value? So company, what does the senior management value? This is an extremely important question. If the senior management value the sales, senior management value the process, senior management value the people, senior management, what are the values of the senior management? Like I know most of the industries, even here in America and back there home, people are just something about which everybody likes to talk about. People is an aspect on which everybody likes to give big speeches. When it comes to delivering for the people, the senior management is always treating them
not what they deserve. So what it is the senior management value? Say, for example, when they are giving your annual increments, what are their metrics for determining who worked better? 99.9% companies value the numbers. Nobody now value the process. And only 1% companies, they value the process because their metrics are numbers, of course, number one, but then there are other dimensions on which they measure their people. Say, for example, turnover, following of the process, how many managers were promoted, feedback and contribution from this manager, and could be some other aspects. So it depends, what are your metrics? Say, let me explain this to you. For companies where numbers are very important, they value the numbers. So this guy is one sales manager, for example. And here are the value, and this side is the months. So this guy started from here, January, February, March, April, May, and then. And this is how he achieved, this was his target. So he achieved his target in terms of value in the month of December. He achieved his value 105%. I'm going to draw another graph on the same axis. Say this is for HR, which means the people who worked under him, how many people left, how many vacancies he had around the year. And so it's like he started with 4 people, then 3, then 4, 5, then 2, then 3, then 2. And here he had full team. At the end of the year, he had full team. Okay, so his graph here is like this, but his performance is like peak and troughs. Let's check him on the other metrics. See, let's say how many people he gave to the organization for management position. How many people he developed. He started from here and he ended here. So he actually gave nobody as a manager to the organization. Nobody was promoted under him. Okay, what about the following of the process? Following of the process is like this. Sometimes he's here, sometimes he's here. He's straight. He never tried to get here, which is the ideal place to follow the process. So we tried to cover the 4 different metrics, but the numbers in the end, he was 105%, despite of all the peak and trough, and he gets an 18% increase in salary. And then there is another guy who started here. When he started, he was 76%, and he ended here at 96%, and he never got an increment, or he got only 5% increment because he missed, but he started by 4%. About his HR, there never was a vacancy. His team's participation in meetings was absolute. He gave 3 district sales managers to the organization in 1 year. And his DCRs, his people's coverage, means following of the process, cycle guide following, marketing plan, and execution of the activities was not only about spending the budget, but also about getting the results. Customer development was the highest. So
and he started from here. Everything was big, but he missed his number by 4% because he started from low. And when he started, he had like 3 people. When he ended the year, he had 7 people. He gave 3 managers to the organization. He brought stability to the team. He brought more customers. He developed good pool of customers. But in the end, because he missed his target by 4%, so he didn't get anything as an increment. Because the company values the numbers. So in order to understand the corporate culture, you need to ask this question: what does the company value? So you will know what does the company value. That will help you to understand more if you want to excel in an organization. Does your company communicate to outside stakeholders? Communication. This is most pharmaceutical companies in America, they do talk to the outsiders, outside stakeholders, but in Pakistan, very little. But I've seen some people posting on LinkedIn, like their achievements and their vision and their mission. So why this question is important: communication to outside stakeholders. Because that means the company has a transparent culture. Company likes to give absolute access to the information within the organization. There is no double standard about hiding information from its employees. Of course, there are certain secrets which are always to be kept behind in the office and not to be told to everybody. But then there is a part of the information which every employee, especially the sales manager type employees, I mean, up to that degree of people, should have the access to. If the company believes in information sharing and a transparent culture, open door policies, that company has a better culture than the other company. So how many of the companies do actually have the ability to communicate to outside stakeholders? Not too many. In Pakistan, I know not too many. Pharmaceutical industry is very little about this, but FMCG companies, car industries, financial service industries, and similarly the airplane industry and other such industries, they all, of course, they always communicate with outside stakeholders because they're corporates and they have to give information to the media. So this will also determine what kind of culture a company is having. So the value and communication to the outsider, of course, is very important, and knowing it is very important. Number 3 is the corporate culture actually defined by your organization? This is very important. Many companies do not have a defined corporate culture. They say that they have a culture, which is a reflection of the culture of the industry to a certain degree. Of course, as I said in the beginning, industry has its own culture, and then companies has a reflection of the industry's culture, but then they have their own culture too. But as I say, defining the corporate culture is very important. You need to define your values, your mission, your vision, and all these need to be defined and put in a statement. So are you working in a company where all these things are defined properly? And the last thing, which is also very important, is how are performance management and reviews done? Performance management and reviews पे जो बात अभी मैंने की है values के ऊपर, वो मैंने performance और reviews किस तरह से किए जाते हैं.
परफॉर्मेंस और रिव्यूज किस तरह से किए जाते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है सेल्स मैनेजर के लिए। अगर वो अच्छा सेल्स मैनेजर बनना चाहता है उसको अपनी कंपनी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। और कल्चर, जो लोग कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, दीज आर आल्सो गुड क्वेश्चंस टू आस्क हियर। एक कंपनी के अंदर हायरार्कल तो अप्रेजल्स या रिव्यूज तो नहीं होते, 360 डिग्री के ऊपर होते हैं, या फिर पीयर रिव्यूज होते हैं। इन सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जो है किस तरह के परफॉर्मेंस रिव्यूज करती है। वन साइडेड करती है, बगैर लोगों को बुलाई कर लेती है, हायरार्की के अंदर बैठ के करती है, 360 डिग्री पे करती है, लोगों से पूछती है। पीयर रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पीयर भी, मैंने पाकिस्तान में पीयर भी एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, वो भी फिर कैंडिडेट फीडबैक नहीं दे रहे होते। जो भी कल्चर है उस कल्चर को जानने के लिए आपको जो है ये सारे सवाल जो है वो करने जरूरी है। अभी तक हमने डिफाइन कर लिया कि हमें क्या क्वेश्चंस करने हैं ये जानने के लिए कि इंडस्ट्री का कल्चर क्या है, और फिर हमें कॉर्पोरेट या कंपनी का कल्चर क्या है। अभी डिपार्टमेंट के कल्चर को भी समझना जो है वो भी बहुत जरूरी है। सो डिपार्टमेंट के कल्चर को समझने के लिए जो है वो पहला सवाल तो यही है कि इज देयर एन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी देखें सेल्स डिपार्टमेंट का इंटरेक्शन जो है वो किन किन डिपार्टमेंट के साथ होता है वो आपको पता ही है। तो क्या ऐसा कल्चर है कंपनी का कि जहाँ के इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, और डू इंडिविजुअल्स और सेपरेट ग्रुप वर्क इन साइलोस, या फिर यह है कि इंडिविजुअल ग्रुप्स अपना अपना काम कर रहे हैं, दे वर्क इन साइलोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कंपनीज के अंदर मैंने देखा मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। मार्केटिंग वाले, और अब उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि जो मार्केटिंग और सेल्स का हेड है ऊपर एक कर दिया जाता है अपनी आसानी के लिए। तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि मार्केटिंग और सेल का हेड एक कर दो, तो एक, क्योंकि उसके टारगेट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स एक होते हैं, तो वो हमेशा सेल्स वालों को प्रोटेक्ट करता रहता है, मार्केटिंग वालों से सेल्स वालों की खिंचाई भी करवाता रहता है, और जब जहां पे जो चीज होती है उसको फाइन ट्यून करता रहता है। तो ट्रेड ऑफ चलता रहता है उसका हर वक्त, लेकिन इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियली वो इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि फिर मार्केटिंग और सेल्स एक जैसी हो जाती है। तो प्रोडक्ट मैनेजर भी सेल को देख रहा होता है, पर सुबह सुबह प्रोडक्ट मैनेजर भी फोन कर रहा होता है सेल के लिए, मार्केटिंग मैनेजर भी फोन कर रहा होता है सेल के लिए, जनरल मैनेजर भी फोन कर रहा होता है सेल के लिए। और फिर वो सारे के सारे जो फील्ड में जाते हैं वो भी मार्केटिंग वाले बन के नहीं जा रहे होते, वो भी सेल्स वाले बन के जा रहे होते हैं। सो बड़ा, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट अगर आपस में, क्या एचआर और सेल्स जो है वो एक ही पेज पे हैं कि नहीं है। मैं यहाँ पे हाईमाउंट की एग्जांपल आपको दूंगा। हाईमाउंट वो वाहिद कंपनी जिसके अंदर मैंने काम किया, और जिसकी इस तरह की जो वैल्यूज थी डिपार्टमेंट के अंदर, जो वैल्यूज थी उनकी कॉर्पोरेट वैल्यूज भी उन्होंने अच्छी डिफाइन की हुई थी, लेकिन वो फॉलो नहीं करते उसको पूरी तरह से। उसमें बहुत सारी सटल चीजें हैं और उनको मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उनकी प्लानिंग मीटिंग्स होती हैं, से फॉर एग्जांपल उस कंपनी में, उसके अलावा मैंने इतनी कंपनियों में काम किया, किसी की भी प्लानिंग मीटिंग में मार्केटिंग वालों को बहुत तकलीफ होती है प्लानिंग मीटिंग में सेल्स वालों को बैठाते हुए, एचआर वालों को बैठाते हुए, फाइनेंस वालों को बैठाते हुए। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरेक्शन नहीं होता, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट अलग से होते हैं। हाईमाउंट वाज वन कंपनी वेयर आई वर्कड एंड आई फाउंड कि जब प्लानिंग मीटिंग करता था, और मैं क्योंकि ट्रेनिंग का हेड था वहां पे, मैंने वहां पे 3-4 डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग का हेड था वहां पे, तो ट्रेनिंग का हेड जो है वो मार्केटिंग, देख ले मार्केटिंग की प्लानिंग मीटिंग की कॉल ट्रेनिंग का हेड देता है, वो सबको बुलाता है। और जब वो सबको बुलाता था तो ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग नीड्स निकल के आती हैं प्लानिंग मीटिंग के अंदर। एचआर वाले को भी बिठाया जाता उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि उसने बंदे हायर करके देने होते, उसने बंदे ट्रेन करके देने होते, उसने रेम्यूनरेशन और सैलरी पैकेजेस बना के देने होते। फाइनेंस वालों को भी उस मीटिंग में बिठाया जाता था, क्योंकि उन्होंने फंड्स देने होते थे, उन्होंने पैसे देने, उन्होंने बताना होता था कि कितने पैसे हम दे सकते हैं, कितने पैसे इस ग्रुप में पड़े हुए हैं, कितने पैसे ये ग्रुप ले सकता है। और फिर सेल्स के बंदों को भी बुलाया जाता था। सेल्स का हेड तो बैठता ही बैठता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी बुलाया जाता था अच्छा सा, और 1-2 मेडिकल रैप भी अच्छे से बुलाए जाते थे। तो दिस इज कॉल्ड द आइडियल इंटरेक्शन। यहाँ पे जब इस तरह के इंटरेक्शन, जब प्लानिंग मीटिंग के जब नोट्स डाले जाते थे, और फिर उसके बाद प्लानिंग मीटिंग के नोट्स के ऊपर फिर एजेंडा बनाया जाता था साइकिल मीटिंग का,
तो दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फार्मा इंडस्ट्री में मैंने काम किया जहां जहां पे, वहां पे इस तरह का कल्चर मौजूद नहीं है। जहां पे मेरा अपना हाथ पड़ता था, जब मैं पावर में था, तो मैंने इसी कल्चर पे इसी तरह से फिर प्लानिंग मीटिंग्स करवाई हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला हमारे जाने के बाद नहीं होता। शायगान में जब मैंने ये बात की तो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस थी वहां पे इस बात के ऊपर, नहीं नहीं नहीं, पहले तो उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि ट्रेनिंग वाला क्यों हमारी मीटिंग कॉल करवाएगा। फिर उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि उस मीटिंग में फाइनेंस और एचआर वाले के बैठने का क्या प्रॉब्लम है। तो हर बंदे को अपनी अथॉरिटीज जो है वो चैलेंज होती हुई नजर आना शुरू हो जाती है वहां पे। सो इज देयर एन इंटरेक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट और दे आर वर्किंग एज इंडिविजुअल ग्रुप और साइलोज, ये जानना भी कल्चर जानने के लिए बहुत जरूरी है। पर एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच is there an us versus them? us versus them कल्चर तो नहीं है वहां पे। अगर ये मेंटेलिटी है वहां पे तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता है। वो होगा क्या वहां पे? वहां पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए। हर ग्रुप की ख्वाहिश यही होगी कि हम जो है वो ज्यादा बजट ले लें, हम ये बजट ज्यादा ले लें, हमारे पैसे ज्यादा आ जाए, हमारे पास रिसोर्स ज्यादा आ जाए, हमारे पास मैन पावर ज्यादा आ जाए। तो ये भी एक एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कल्चर है उसका हिस्सा है। इसको भी अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको ऑपरेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। और फिर ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट वर्सेस दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, और जो भी कोई सपोर्ट डिपार्टमेंट है कंपनी में, जैसे R&D है, ऑपरेशन है, इनके दरमियान सेल्स डिपार्टमेंट वर्सेस ये सारे जो हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज कितनी हैं और डिफरेंसेस कितने हैं। हम कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री का कल्चर जो है वो कॉर्पोरेट के कल्चर के साथ मिलता होना चाहिए, और कॉर्पोरेट का कल्चर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के कल्चर के साथ मिलता होना चाहिए, बल्कि उल्टा चलते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का कल्चर या किसी भी डिपार्टमेंट का कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर होना चाहिए और उसके साथ मैच करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, और फिर उसका उसके साथ। और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो इस डिपार्टमेंट के साथ मिसअलाइंड है, अगर वो इसके साथ मिसअलाइंड है, तो फिर यहाँ पे भी कल्चरल क्लैश होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी उतनी ज्यादा कल्चरल अलाइनमेंट होगी, जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उतनी ही ज्यादा कल्चरल फेलियर होने का जो चांस है वो हाई होगा। तो ये वो सवालात हैं जिन सवालात को करने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का कल्चर जो है वो क्या कॉर्पोरेट कल्चर, क्या इंडस्ट्री का कल्चर और डिपार्टमेंट कल्चर आपस में कितना अलाइंड है, और कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, और सारी चीजों को ओवरकम करना कितना आसान है। कल्चरल मिसअलाइनमेंट जो है, ये तो जो है इससे तो आपकी जान नहीं छूट सकती। जैसे मैंने कहा कि डिपार्टमेंट का कल्चर कंपनी के कल्चर से फर्क हो सकता है, चांसेस हैं उसके, और वो हमेशा फर्क ही होता है थोड़ा बहुत। इसी तरह कंपनीज का कल्चर जो है वो इंडस्ट्री कल्चर से भी फर्क हो सकता है। लेकिन कल्चरल मिसअलाइनमेंट होती कहाँ पे है? ज्यादा ज्यादा कल्चरल मिसअलाइनमेंट कहाँ पे होती है, ये भी इसको भी लिख के कर लेते हैं। ज्यादा कल्चरल मिसअलाइनमेंट जो है वो उन कंपनीज में होती है जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। लार्जर दी ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो फिर उनके जितने उतने ही ज्यादा उनके बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं और ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज से उनके न्यूमरस बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो हर बिजनेस यूनिट का कल्चर अलग होता है। से अगर FMCG में है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में है, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ब्यूटी की प्रोडक्ट भी हैं और टॉयलेटरीज भी हैं उनकी, तो फिर डिफरेंट कल्चर होगा। यहाँ पे और कल्चर होगा, यहाँ पे और कल्चर होगा।
ठीक है, अभी आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात कर लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, पुराने जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो उसके अंदर अब बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना ही कल्चर है। इलेक्ट्रॉनिक वाले का अपना कल्चर है, रिसर्च वालों का अपना कल्चर है, फाइनेंशियल सर्विसेज वालों का अपना कल्चर है, हालांकि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके चांसेस वहां पे कल्चरल मिसअलाइनमेंट के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे जितनी बड़ी कंपनी होगी। न्यूमरस बिजनेस यूनिट्स। दूसरी क्या रीजन हो सकती है कि बिजनेस यूनिट ज्यादा होंगे तो डिपार्टमेंट्स भी ज्यादा होंगे, डिपार्टमेंट ज्यादा होंगे तो फिर वहां पे भी कल्चरल मिसअलाइनमेंट हो सकती है। मेन कंपनीज जिनके अंदर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं और जिनके अंदर ये सिचुएशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो आपके सामने ही है। इसमें सबसे पहले तो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं। इस तरह की कंपनियां जो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज होती हैं, उनके अंदर आपको इस तरह की मिसअलाइनमेंट्स नजर आती हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक मीडिया कंपनी है और उनके न्यूज चैनल भी हैं और उनके स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं और उनके एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं। तो अगर उस मीडिया कंपनी के 3 चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स भी हैं और इसमें भी 3-4 आगे हैं, और फिर न्यूज चैनल है और उसमें भी 2 तरह की न्यूज है, और फिर एंटरटेनमेंट के हैं तो उसमें भी और तरह के 3-4 किस्म के एंटरटेनमेंट्स हैं, और फिर कोई बिजनेस चैनल भी है उनका, और फिर कोई नेशनल ज्योग्राफिक टाइप भी कोई चैनल है। आप यहाँ पे सारे चैनल्स आपस में एक दूसरे से मिसअलाइंड नहीं होंगे। सारे डिपार्टमेंट, एक कल्चर तो होगा कि वो सारे की सारी मीडिया कंपनीज है, लेकिन फिर डिपार्टमेंट्स का कल्चर जो है वो फर्क हो जाएगा यहाँ पे। सो एज आई सेड, एक एग्जांपल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स हो सकते हैं यहाँ पे, दूसरे कौन से हो सकते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मैंने पहले ही एग्जांपल आपको दे दी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मैंने आपको एग्जांपल दी है। और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का ये प्रॉब्लम होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे मैकडोनल्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स अमेरिका में, एक मैकडोनल्ड का कल्चर है, वो आपको मैकडोनल्ड का बर्गर दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको वो मिलेगा। लेकिन अब मैकडोनल्ड की मकालू टिक्की जो है वो आपको इंडिया में मिलेगी, और मैकडोनल्ड का चपली कबाब जो है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। वो मैकडोनल्ड इंटरनेशनल में नहीं आता, वो उसका अपना एक डिफरेंस हो गया ना, डिपार्टमेंट के अंदर मेन्यू का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज भी समझने की है। तो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल मिसअलाइनमेंट जो है वो हो जाती है। स्मॉलर कंपनीज के अंदर कल्चरल मिसअलाइनमेंट नहीं होती, वहां पे कल्चरल क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर तो बड़ा छोटा सा कल्चर होता है उनका। और कल्चरल क्लैशेस किस तरह से हो जाते हैं कि कोई बंदा बाहर से आया, वो उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, कंपनी पहले से काम कर रही है, एक आउटसाइडर आया, उसने आगे कहा यार आप लोग तो ये नहीं करते, आप लोग तो वो नहीं करते। जैसे मुझे याद है, तो फार्मेटिक में गया तो डॉक्टर लिस्टें कोई नहीं अपडेटेड, कवरेज प्लान्स कोई नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कोई नहीं है। तो ये जब आप करते हैं तो कल्चरल क्लैश हो जाता है ना आपका उन लोगों के साथ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहे हैं। फाइनेंस वालों को और सप्लाई चेन वालों को प्रॉब्लम आनी शुरू होगी मुझसे, सेल्स वालों को मुझसे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, मार्केटिंग वालों को मुझसे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी कि बिजनेस प्लान ही कोई नहीं है उनके पास। तो वो कल्चरल क्लैश आपका हो जाता है वहां पे जाकर छोटी कंपनी में। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सेल्स मैनेजर जो है वो इफेक्ट तो नहीं कर सकता चेंज को, चेंज लेके नहीं आ सकता कल्चर के अंदर, लेकिन कल्चर को समझने के बाद वो उस कल्चर में ब्लेंड इन होके वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। और अगर वो कल्चर को समझ जाता है तो फिर उसके लिए कॉर्पोरेट कल्चर को समझना, इंडस्ट्री कल्चर को समझना और डिपार्टमेंट कल्चर को समझने के बाद वो इस पोजीशन में होता है कि वो अपनी फीडबैक ज्यादा अच्छे तरीके से दे सके और उस फीडबैक के ऊपर आने वाली पॉलिसीज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बन सके और ज्यादा अलाइंड हो सके कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के कल्चर के साथ, और डिपार्टमेंट का कल्चर जो है वो भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके और ज्यादा अलाइंड हो सके इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट के कल्चर के साथ। तो ये
सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आज डिस्कस कर ली, और अपनी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी हमारी, हम उसमें सेल्स मैनेजर के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड नाइट।